Good morning, dear students. We will continue solving the exercise sums. So today we are going to solve question number 14. Now this is very important sum. Let us first understand the question. A bullet of mass 10 gram traveling with velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. यानी कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, देयर इज अ बुलेट, द मास ऑफ द बुलेट इज 10 ग्राम, इट इज ट्रैवलिंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड. नाउ व्हाइल ट्रैवलिंग इट स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक. तो जो वुडन ब्लॉक है इट विल प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ दैट बुलेट. ओके, सो नाउ it will strike and then it will come to stop. So final velocity will become 0. So what is the time before it stops? It stops in 0.03 second. Okay, using this data I need to calculate the distance of penetration of the bullet in the block. यानी कि ब्लॉक में वो जो बुलेट है वो कितना डिस्टेंस अंदर घुसेगी, that we need to find out. Also calculate the force exerted by the block on the bullet. Okay, we also need to find the force exerted by block on the bullet by using the formula F is equal to m into a. तो सबसे पहले जो भी डेटा हमको दिया हुआ है, first of all let us write that data down, because after writing the data we will know that which is the most optimum or the most suitable formula that we have to use for solving this sum. Okay, so now first of all what is given? The mass. Okay, so mass is represented as m, is given as 10 gram. If I convert it into kilogram, it is 0.01 kilogram. Okay, with initial velocity, so value of u is 150 meter per second. Okay, now obviously final velocity v will be 0 meter per second. Why? Because when the bullet strikes the block, after certain time its velocity will become 0. वो ब्लॉक के अंदर जाके फंस जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. सो फाइनल वेलोसिटी v इज टेकन एज 0 मीटर पर सेकंड. ये होने में कितना वक्त लगता है? सो टाइम t is given 0.03 second. Okay, I need to calculate the distance of penetration of the bullet, यानी कि बुलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आफ्टर पेनिट्रेटिंग, वो मुझे फाइंड करना है. S is equal to question mark and I also need to find the value of force, that is F is equal to question mark. तो यहाँ पे हमको दो चीज फाइंड करनी है, एक तो वैल्यू फाइंड करनी है S की, एक फाइंड करनी है F की. फोर्स F is equal to mass into acceleration, तो वहां पे मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए. S is equal to v square minus u square upon 2a, तो वहां पे भी मुझे वैल्यू चाहिए ऑफ a. So first of all I need to find out the value of acceleration a. So we all know that acceleration a is v minus u upon t. ये फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 8 में भी कई बार यूज की है. So acceleration can be found out by using formula a is equal to v minus u upon t. So now let us put the values. So therefore a is equal to, you can see over here, value of final velocity v is 0 minus initial velocity is 150 upon time is 0.03. okay, so therefore acceleration a is minus 150. अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है into 3 तो मुझे 2 डेसिमल्स यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो I have to multiply here with 100, so the downside will become 3. So now when you cut this, I have minus 50 into 100, so that is minus 5000 meter per second square. So in short, the acceleration achieved by the bullet is minus 5000 meter per second square. After finding the acceleration, the sum becomes easy. Why? Because now I can find the value of s and I can also find out the value of f using the value of acceleration a. तो हमको पता है डिस्टेंस s
is equal to v square minus u square upon 2a, because we have formula v square minus u square is equal to 2s. In that same formula I have made s as subject of formula. Why? Because here I need to find the value of s, that is the distance traveled by the bullet. So now let us put the values. So again, distance traveled s is equal to v square, so we need the value as 0, so 0 whole square minus u square, so u की वैल्यू है 150 upon 2 into a, value of a is minus 5000. Okay, so now value of s is 0 माइनस करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. 15 का स्क्वायर है 225 और ये 0 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 जीरो. सो 150 स्क्वायर इज 22,500 अपॉन ये इंटू 2 करेंगे तो आएगा माइनस 1 2 3 4. ओके, सो नाउ व्हेन यू टेक 2 डिजिट्स ओवर हियर, दिस साइन इज आल्सो माइनस बिकॉज़ 0 में से ये माइनस हुआ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. यहाँ पे 4 डेसिमल हम आगे लाएंगे तो इट विल बी 2.25 मीटर. यानी कि ये जो बुलेट है वो वुडन ब्लॉक में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 2.25 मीटर. सो इट विल पेनिट्रेट a distance of 2.25 meter and then it will stop over there. Okay, now the second thing that is I need to find the force exerted by the block on the bullet. So therefore to find force F is mass into acceleration. So therefore force F, mass हमारे पास कितना है 0.01 kg, तो उसको हम प्रॉपर्ली लिखे ताकि डेसिमल ना आए तो यह होगा 10 upon 1000, that is the value of mass, into acceleration की जो वैल्यू है वो है minus 5000. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 zeros are cut, 1 2 3 zeros are cut. So the force applied by the wooden block on the bullet is minus 50 न्यूटन. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है? ये जो फोर्स है वो बुलेट का जो मोशन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ओके, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ फोर्स इज नेगेटिव. सो वंस अगेन लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओवर हियर. अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, तो बुलेट का मास 10 ग्राम है, दैट इज इक्वल टू 0.01 kg, is traveling with velocity because that means its initial velocity is 150 meter per second, strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. तो उसकी जो बुलेट है उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड एंड टी हमने ले लिया 0.03 सेकंड बिकॉज़ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ we need to calculate the distance of penetration of the bullet, distance traveled by the bullet after it strikes the wooden block. It is indicated by s. S is equal to question mark, and we also want to find the force exerted by the block on the bullet. So I also need to find the value of force F. यहाँ पे मुझे दो चीजें जो फाइंड करनी है, फोर्स और डिस्टेंस ट्रैवल, दोनों में एक चीज की कमी है और वो चीज है एक्सेलरेशन. ओके, तो ये दोनों चीज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, दैट इज a is equal to v minus u upon t. So therefore a is 0 minus 150 upon 0.03. When you calculate it, the value of acceleration will come minus 5000 meter per second square. Now to find the distance traveled by the bullet, s is equal to v square minus u square upon 2a. When you put the values, the distance of penetration of the bullet in the wooden block comes to 2.25 meter. After that, I want to find the force exerted by the block on the bullet. So force F is equal to mass m into acceleration. ये जो 10 ग्राम है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट के लिए डिवाइड बाय 1000 किया क्योंकि यहाँ पे हम इजीली कट कर सके इसलिए. So I have written 10 upon 1000 into acceleration we just now found out to be minus 5000. So by eliminating the zeros, the final answer, that is the force exerted by the wooden block on the bullet, comes to minus 50 Newton.
Okay, now we'll solve question number 15 of exercise. The question is like this. An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? An object which is having a mass of 1 kg is traveling in a straight line with its initial velocity of 10 meter per second. After some time, it collides and sticks to a stationary object which has mass 5 kg, and then both will travel together. So we have to find the velocity of the combined object, that is the object of 1 kg mass when it collides and sticks with another stationary wooden block of mass 5 kg. तो ये जो combined object हुआ जिसमें ये 1 kg का object भी होगा और ये 5 kg का wooden block भी होगा, both of them in the combined form will travel with a certain velocity. We need to find the value of the velocity of that combined object which contains the object as well as the wooden block of mass 5 kg. Okay, so first of all let us write down the things that are given in the question. So here the mass of the object, so therefore m1 is 1 kg. Okay, is traveling in a straight line with velocity of 10 meter per second, यानी उसकी initial velocity u1 is 10 meter per second. Okay, it collides and sticks to a stationary wooden block. So this wooden block is our object 2. So its mass will be taken as m2, which is 5 kg. Now यहाँ पे हमको दिया है कि जो वुडन ब्लॉक है दैट इज स्टेशनरी. जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0. सो देयरफॉर हियर u2 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. अभी यहाँ पे हमको क्या यूज करना है? वी हैव टू यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एज वेल एज द ऑब्जेक्ट बिफोर द इम्पैक्ट, and then we'll also find the total momenta after the impact, and then by comparing them both we will get the value of v. So now first of all, total momentum of both objects before impact. Before impact यानी दोनों का जब कोलिजन नहीं हुआ है तब उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो, सो दैट वुड बी फाउंड आउट बाय यूजिंग फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2. ओके, सो m1 दैट इज 1 into u1 that is 10 plus m2 which is 5 into u2 which is 0. So 10 ones are 10 plus 5 zeros are 0, so 10 plus 0 यानी कि ये जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज द वुडन ब्लॉक, उसका जो कंबाइंड मोमेंटम है बिफोर द इम्पैक्ट इज 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. तो यही वैल्यू हम फाइंड करेंगे आफ्टर द कोलिजन और आफ्टर द इम्पैक्ट. सो नाउ total momentum of both objects after collision or impact. अब यहाँ पे क्या होता है? जब ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड होते हैं तो दोनों स्टिक हो जाते हैं, तो दोनों का मास हो जाएगा सेम. सो दैट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू उनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो हमको करनी है फाइंड, which is denoted by v. So now let us put the values. The value of m1, that is the mass of object 1, is given to be 1 kg. So here I will write 1 plus m2, that is the mass of the wooden block. In the question it is given that the mass of the wooden block is 5 kg. So here I will write 5 into v. So this is 6v. Okay. Now we all know by using the law of conservation of momentum, the sum of the momentum before the impact should be equal to the sum of the momentum after impact. Okay, so therefore by using
or according to law of conservation of momentum, we will have 6v is equal to 10. So therefore value of v is 10 upon 6. So this is 5 upon 3, and when you divide it, it will be 1.666. So by rounding off, I will get the total velocity as 1.67 meter per second. So the combined velocity of the object as well as the wooden block will be 1.67 meter per second. So once again, how we brought the answer? Here I am having an object of mass 1 kg traveling in a straight line with velocity 10 meter per second. तो यहाँ पे हुआ मेरा m1 1 kg और u1 हुआ 10 meter per second. Now what is the another object? We are having a stationary wooden block having mass 5 kg. So m2 is 5 kg as the wooden block is stationary. Value of u2 is 0. तो फिर बाद में हम क्या करेंगे? We will take the total momentum before the collision and the total momentum after the collision. So total momentum of both the objects before the impact or before the collision will be found out by using the formula m1 u1 plus m2 u2. So this is the momentum of object 1, initial momentum, and this is of object 2. By putting the values, the total momentum before the impact is 10 kilogram meter per second. Now we will again write the formula to find out the total momentum of both the objects, but after the impact. तो जब impact होता है, जब collision होता है, तो क्या होता है? दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं. So now the mass of the object is combined. So mass is m1 plus m2 into their together velocity. वो तो हमको find करनी है. So it is indicated by v. So by putting the values of m1 and m2, I got the total momentum at 6v. बट जैसा कि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो इनिशियल मोमेंटम होता है दैट इज द मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट. सो बाय दैट लॉजिक दिस 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड एंड 6v शुड बी सेम. सो आई रोट 6v इज इक्वल टू 10. सो therefore value of v is 10 divided by 6. So that is 5 divided by 3, and when you carry out the division it is 1.66666. It goes on. So by rounding it off, I got the velocity of the combined object, that is the object as well as the wooden block, to be 1.67 meter per second. यानी कि जब ये object जो 1 kg का है, when it strikes the stationary wooden block with a velocity of 10 meter per second, both will move together with velocity of 1.67 meter per second. Okay, so dear friends, last two sums of the exercise, that is question number 16 and question number 18. Both are very easy, very simple sums. Let us understand. An object of mass 100 kg is accelerated from 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. यानी कि कोई जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमको दिया है 100 kg, उसको हम एक्सेलरेट करके उसकी स्पीड बढ़ाते हैं. तो उसकी इनिशियल स्पीड है 5 meter per second. Its final velocity is 8 meter per second in how much time? In 6 seconds. तो हमको क्या फाइंड करना है? Calculate the initial and final momentum of the object. Momentum, that is mass into velocity. तो जब initial momentum फाइंड करना है तो I will multiply mass with initial velocity, and when I want to find final momentum I will multiply the mass with the final velocity. Okay? We also need to find the magnitude of force exerted. तो जो फोर्स है उसकी फॉर्मूला हमको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास तो ऑलरेडी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम भी दिया हुआ है. सो यूजिंग देम आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a एंड देन आई विल पुट द फॉर्मूला फोर्स F is equal to m into a. तो मुझे जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, दैट विल बी आल्सो डन. ओके, सो नाउ जो चीज हमको दी हुई है वो लिखेंगे. तो मास m ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 100 kg. एज यू कैन सी दैट इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम 5 meter per second to 8 meter per second. यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 meter per second and its final velocity v is 8 meter per second. In how much time? In 6 seconds. ठीक है, तो जो हमको फाइंड क्या करना है? इनिशियल मोमेंटम. मोमेंटम इज अगेन प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. तो
तो जब मैं बात कर रहा हूं इनिशियल मोमेंटम, in that case I will multiply mass with initial velocity, and when I want to find final momentum I will multiply mass with final velocity. So as you can see over here, mass is given, initial velocity is given, final velocity is given. तो जब आप वैल्यूज रखोगे तो इनिशियल मोमेंटम दैट इज m into u, that is 100 into 5, the answer will be 500 kilogram meter per second. In the same way, the value of final momentum, that is m into v, that is 100 into 8, will be 800 kilogram meter per second. तो हमारा पहला पार्ट है वो इजीली कैलकुलेट हो गया. अब दूसरे पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है? We have to find the magnitude of force. So once again, what is the formula to find the force of an object? Force F is equal to m into a. तो आप जब जो दी हुई चीजें देखेंगे तो उसमें मास m की वैल्यू दी हुई है, क्या हमको ढूंढना है? एक्सेलरेशन a. तो एक्सेलरेशन a ढूंढने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे. एक्सेलरेशन a is equal to v minus u upon t. Value of v is 8, value of u is 5, and time t is 6. So that will give me 8 minus 5 upon 6, that is 3 by 6, that is 1 by 2 meter per second square. That is the value of acceleration. तो मुझे acceleration भी मिल गया. तो अब मैं डायरेक्टली यूज करूंगा the formula to find the force. Force F is equal to m into a. Mass m is 100 kg and acceleration जो हमने अभी फाइंड किया that is 1 upon 2. So ये 2 और 100 कट होगा, so the value of force will be 50 Newton, which is indicated by 50 and capital N, which is symbol of Newton. Now one more sum, that is question number 18. Question number 18 में क्या है? How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? डंबल यानी जो जिम में जो आप वेट उठाते हो एक्सरसाइज के लिए, ठीक है? तो ऐसा एक डंबल है, वो एक हाइट से छूट जाता है. So when you leave that dumbbell, it will strike on the ground, and when it will strike on the ground, it will apply some momentum on the ground. तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि what will be the momentum applied by the dumbbell on the ground. तो मोमेंटम की फॉर्मूला क्या है? P is equal to m into v. तो m तो ऑलरेडी दिया हुआ है. What is the mass of the dumbbell? 10 kg. तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है सबसे पहले वैल्यू ऑफ v. तो कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं. As you can see, डंबल को जब आप ऊपर से रिलीज करते हो तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी 0. So u is taken as 0. Mass 10 kg. It falls from height of 80 centimeter. लेकिन उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. That is 0.8 मीटर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोमेंटम p is m into v, यानी हमारा टारगेट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v. ओके, तो we have a formula v square minus u square is equal to 2 into a into s. Now as you can clearly see that when the dumbbell is released from a height, जब आप उसको रिलीज करते हो तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u की वैल्यू हो जाती है 0. तो यहाँ पे u की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया. तो डायरेक्टली मुझे क्या फॉर्मूला मिला? v square is equal to 2 into a into s. So 2 is as it is. यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक्सेलरेशन की वैल्यू you have to take it 10 meter per second square. So a is taken as 10 and s is 0.8 meter. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो v square की वैल्यू आएगी 16. That means the value of v is root of 16. तो जब 16 का रूट निकालोगे तो जो फाइनल वेलोसिटी v है with which the dumbbell will strike the ground is 4 meter per second. अब हमारा सम हो गया एकदम आसान. Momentum transferred p is equal to m into v. Mass of the dumbbell is 10 kg and v is 4 meter per second. So now the momentum transferred by the dumbbell on the ground is 10 into 4, that is 40 kilogram meter per second.